As an author of a part or a part, who is your favorite author other than you? That's a very big comparison because my favorite author, So, from where did you get those rules on phrases? the difference is assumption versus experience. I wanted to take some advice from you for the teenagers around us. Wonderful. आपके माँ बाप ने आपको क्या वैल्यूज़ दी हैं, कहीं ना कहीं वो आपको ज़रूर रोकती हैं. We know कि बच्चे आजकल पेरेंट्स की बात नहीं सुनते. So, could you please give any example? If you see your sibling doing the same, what will you do? Tell me honestly. अपने बच्चों को जितना ग्राउंडेड रखेंगे उतना ही उसकी सपनों की उड़ान और उसकी अपनी उड़ान होगी. बुलिंग का एक सबसे बड़ा रीज़न है ओवर पैम्पर्ड चाइल्ड, राइट? एंड बुलिंग का अनदर रीज़न है अंडर कॉन्फिडेंट चाइल्ड. So, according to you, what are the dire consequences of lack of reading in teenagers? What tips would you give teenagers about the choice of friends? Good friends or bad friends? We can see teenagers falling in love and getting into relationships easily. You know, आपको क्या लगता है कि ये सच में प्यार है या फिजिकल अट्रैक्शन? तेरा हूँ फिलहाल किसी का हो जाऊँ, राइट? यू लुक एट द काइंड ऑफ नेटफ्लिक्स सीरीज. There is one more type of addiction in teenagers. Social media addiction. एक स्टूपिड से वीडियो के मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाते हैं. एक एजुकेशनल वीडियो को 100 व्यूज भी नहीं मिलते. कुछ लोग अपने पैशन को अपना करियर बनाना चाहते हैं, बट उनके पेरेंट्स ये नहीं चाहते. वो चाहते हैं कि उनके बच्चे सिर्फ पढ़ें. सो हाउ टू मैनेज पैशन अलोंग विद स्टडीज? If you can actually make your passion your profession, then I think you're the luckiest person on this earth. What healthy food is to your body, books are to your mind. Well, I am with a woman who always endorses this. So hey you all, I'm Srishti Garg, and today I'm thrilled to bits to welcome my inspiration, my mentor, and a woman who has influenced thousands of people, Ma'am Payal Mohindra. Hi, Welcome, beta. ma'am, on board. Thank you, Srishti. How are you? I'm great. What about you, ma'am? Absolutely fine. So, ma'am, my first question is this. As an author of a part or a part, who is your favorite author other than you? Other than me, oh my God. That's a very big comparison because my favorite author, although there are many, but one that I would like to pick up, and it's my dream to meet that author, to get a book signed by him, is Jeffrey Archer, a master storyteller. And you know what I like most about is the way he weaves his storyline, his sentence formation, and you don't have to be necessarily studying law to understand how to draft a case. So if you read his books, you are going to learn a lot. Okay. Jeffrey Archer, hands down. That's great. What is your favorite book जिसको पढ़कर आपको लगा होगा कि वाह, इस बुक को तो सबको लाइफ में एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए? See, अगर मैं इसको अपने वर्ड्स में बोलूँगी सृष्टि, so I'll say that I have 2 Bibles in my life. Okay. One is Elif Shafak's 40 Rules of Love, and the second is the Dalai Lama's Cat. So I think these 2 are mandatory reads. One must read these books because they are life-changing. Okay. So, ma'am, And you know why I in particular like 40 Rules of Love? Because it's my story, it's my journey of life. So I have undergone a massive transition in my life. There are 2 characters in this book, 40 Rules of Love, which is Shams of Tabriz, and Rumi, the poet. So it's the story of Rumi and his friend. So Rumi shows the quiet, the peaceful sort of, who doesn't say anything to anybody. And Shams is totally bindas, will speak his mind. So I was Rumi at one point of time in my life, and I must say that I was an emotional fool, to an extent of being an emotional fool, and I suffered a lot. And then I changed and I became Shams, and suddenly I would snap at everybody. But then it took me time to slow down myself, to understand that one has to balance. But I'm very happy being Shams now. So good. Why, that I'll tell you later towards the end of the
interview. Yeah. Okay. So I have also read your book, and I must say, you are very creative with your rules and phrases. So, from where did you get those rules on phrases? For example, For example, my favorite one, the frozen moment, which I have myself experienced at yes, a point of time. correct. See, I think basically my book is out of my diverse experience of handling an audience from 20 to a 20,000, from classes to masses. And in my journey, I have taken a lot of steps that made me a better presenter, made me a better communicator. And I think what I've learned the most is or are from my mistakes. And I even have that module, it's called an insult module. So there were a lot of times wherein I was insulted. I will not say that, those were the lows. I was simply insulted, like patak in my face and insult. Like a woman came to me, I remember, and I after generally when I would anchor an event in front of, so this was basically a very high profile government event. And I thought I did it very well. I came down and I knew that a woman was approaching me. And in my mind, I was ready. She will come and say, because when I used to anchor events, मेरे को सबसे ज़्यादा compliments मिलते थे on my voice. So I thought another one coming to appreciate how I've handled it and my voice quality. And suddenly she says, something on a syllable thing that, you remind me of my niece who also talks like you, always stressing on the last syllable. And पहले तो मुझे अंग्रेजी समझ ही नहीं आया. It went past me. Then I deciphered it and processed it and understood what she was trying to tell me. She was making a point which was quite valid. And if she wouldn't have approached me, I would have never made. There are 7 signs to communications, signs to shine. So in my next book, there's a column called 7 Signs to Shine. So उसमें से एक बहुत important aspect है that I understood that day thanks to that insult of mine, and I've picked it up. So all the concepts that I have made comes out of my experience, and of course I always try to give it a very different name because a lot of people tell me, okay, in utter modesty, that I'm insanely creative. So, just to give it a definite shape, a definite name, so that it resonates, it stays with my whoever reads my book or is trained under me, they would remember it. So it strikes a chord with them, and they will always, like a hook. It's there, and they will always remember. So that's how I've made those. As you said, I have joined your course 5 years ago. मैं आपके कोर्सेज 5 years से लगा रही हूँ. बट उसके बाद में मैंने बहुत कोर्सेज लगाए और मुझे एक डिफरेंस लगा कि अगर दूसरी क्लासेस को आप 10 times भी लगाओगे और आपकी क्लास को अगर आप 1 week लगा लो तो एक ड्रास्टिक चेंज दिखता है जो दूसरी क्लासेस से हमें नहीं दिखता. तो ये कैसे होता है? See, again, in all modesty, what and honesty, मैं आपको ये बताती हूँ that what's the difference. So I guarantee a transformation which 70% of the times happens. 30% it depends that you might take another batch or another course and whatever. Sometimes it's even less, but majority of the time 70% is a very good score, by the way. So what's the difference when you either read the book or you enroll for my workshops? The difference is all the concepts. So now, Srishti, for instance, you have a query that मैम मैं ना ऐसे स्टेज पर गई थी और मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई. So someone who is otherwise a communication coach or is teaching you public speaking will assume that this is what you should do. Where in my case, having handled more than 1,000 events, India internationally, like I told you, with masses, with classes, I would have definitely experienced something or the other or something similar to that on stage. So in my case, it will come out of my experience. So the difference is assumption versus experience. So the workshops come out of the horse's mouth. So my next question to you is, as I was reading your book, there is a topic called the triangle effect. Yeah. जिसने मेरी attention Yes. which caught my attention. In that effect, you have given emphasis on life skills as a foundation pillar. Absolutely. So as a life coach, I wanted to take some advice from you for the teenagers around us. Wonderful. Brilliant. I think you picked up the most
important, in fact, relevant topic, which is life skills. So generally, we think that to be able to communicate better, one-on-one or personal, professional, we should be able to just speak well. No, that is not the case. We really need to work upon our life skills, and that is why in all my workshops I emphasize a lot on life skills. So please go ahead with your questions. As we see around us that there are a lot of things which distract as well as attract the teenagers. Correct. Therefore, how to cope up that influence? So I'll say so let me rephrase this question, how to escape the influence, which is the bad influence. So there's this saying that goes by, anything good in life is either illegal, immoral or fattening. So fattening part ko hum abhi chhod dete hain, we are not getting into the health part of it right now. But illegal or immoral. So generally either we are not supposed to do something or it is even illegal doing it, right? Let's pick up a scenario wherein out of 10 children, 8 are doing something which they are not supposed to do, either illegal or immoral. So when you are part of those 10 and you see 8 people doing it, so you become the remaining 2. Exactly. Initially, when you will see something bad happening, what's your instant reaction? You are shocked. And then you see it the next day, you are like not relatively that shocked. And after a week or 10 days or a month's time, you think it's fine. Itna to chalta hai. It becomes a new normal for you. Wherein, let me give you another picture. It is up to you whether you want to remain that 2% or you want to mingle in that 8% to be cool or to be acceptable, which is what we call the peer pressure. So Srishti, where over here your life skills, your basic values will come into picture. आपके माँ बाप ने आपको क्या values दिए हैं, कहीं ना कहीं वो आपको ज़रूर रोकती हैं. So your family values become very important, whether you want to be a part of that 8% or you want to be that 2%. And I again say that it happened with me also, and I always follow this, that if you don't like, as the Romans do, make Rome to your tune. So whether you want to take those 8% and take just 2% out of it, and वो जो 8% है उसको 6% कर दो, 2 लोगों को इन्फ्लुएंस करके अपनी तरफ ले आओ. या आप उनको इन्फ्लुएंस करके अपनी तरफ ला सकते हो. अगर वो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उस 2% में रहो. Don't get influenced by that 8% who's going illegal or immoral just because you want to be a part of that peer pressure. So if you can understand this as a teenager, as an adult, as a youngster, trust me, your foundation will always be strong. Okay. So as you talked about family values, we know कि बच्चे आजकल पेरेंट्स की बात नहीं सुनते. So could you please give any example? देखिए, पेरेंट्स की एडवाइस तो फ्री की एडवाइस होती है बच्चों के लिए. तो मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि बच्चों को लगता है दैट यू नो आप पेरेंट्स आर ऑलवेज गिविंग एडवाइस. फॉर देम द वर्ड इज पेरेंट्स टोकते बहुत है ना. लेट मी गिव यू सिचुएशन. सो इफ यू थिंक दैट पेरेंट्स stop you or give you a lot of advice which is very irritating, think of this scenario. Now whatever you are doing, if you have a sibling, good enough. Otherwise, think of your cousin or someone that you really care for who's younger than you. So all the things that you are doing, if you see your sibling doing the same, what will you do? Tell me honestly. I'll also do that thing. नो, आप कोई चीज़ कर रहे हो और आपका छोटा भाई या बहन, यंगर सिबलिंग, आपका छोटा भाई या बहन कुछ ऐसी चीज़ कर रहा है जो आपको लगता है कि गलत है. ठीक है, आप बड़े हो और आपसे छोटा भाई बहन या आपका कज़न है और वो कुछ ऐसी चीज़ करता है जो आपको लगता है गलत है, तो आप क्या करोगे? व्हाट विल बी योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट? टेल मी ऑनेस्टली. I'll advise him कि मत कर. तो फिर आपके पेरेंट्स भी तो यही करते हैं. एज सिंपल एज दैट. Yeah. अगर वो बैड कंपनी में है, आपका छोटा भाई या छोटी बहन या आपका कोई कज़न जिस और एनी वन हु इज़ यंगर टू यू, जिसके बारे में बहुत यू केयर फॉर दैट पर्सन, व्हाट विल यू डू? Advise. इंस्टिंक्ट यही रहेगा. Exactly. राइट? तो आपके पेरेंट्स भी वही करते हैं. आप उनको क्यों एडवाइस कर पाए? क्योंकि हम बड़े हैं. आप Of course. एक्सपीरियंस थे. सो आपके पेरेंट्स आपसे कई गुना एक्सपीरियंस्ड हैं. तो वो जब आपको एडवाइस करते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से एडवाइस करते हैं.
हमको वो बहुत इरिटेट करता है, हमको वो एडवाइस चुभता है। लेकिन अगर हम इस एग्जाम्पल को अपने दिमाग में रखेंगे कि अगर हम जो चीज़ कर रहे हैं, हम अगर हमारे किसी छोटे सिबलिंग को, अपने छोटे भाई बहन को या किसी को भी जिसके लिए हम परवाह करते हैं, कुछ ऐसा करते हुए देखेंगे जो हमें लगता है कि गलत है, क्योंकि शायद हमने किया है और हम उसका अब भुगत रहे हैं, या फिर हम उससे बच गए हैं, या हमने वह नहीं किया, सो यू विल ऑलवेज गिव एन एडवाइस। सो हमारे तो पेरेंट्स की लाइफ ही हमारे से बुनी हुई है ना, दे वट एवर दे डूइंग इज़ फॉर द चिल्ड्रन। सो इफ़ दे गिविंग यू एडवाइस, थोड़ा समझने की तो कोशिश करिए वो क्यों, वेयर इज़ इट कमिंग फ्रॉम, एंड थोड़ा भी अगर हम समझ जाएंगे सो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। दैट्स व्हाट आई फील। थैंक यू मैम। मैम आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस हैं तो उसके बारे में आप क्या So I बोलना think चाहते हैं? everything should be age specific. अगर आपकी एज और पॉकेट अलाउ करती है, सो थोड़ा बहुत इंडल्जेंसेस इज़ फाइन, इज़ ओके। बट आप अपने पेरेंट्स से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, या वर्स्ट केस सिनारियो आप पैसे चोरी कर रहे हैं, या यू आर ट्राइंग वट एवर टू गेट जस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप जहाँ पर ब्रांड बहुत चलता है। सो आई थिंक इवन इफ़ यू आर ब्लेसेड, अगर आपके पेरेंट्स के बाद बहुत ज़्यादा पैसा है तो भी आपको एक लिमिट रखनी चाहिए, और अगर आपके पेरेंट्स इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो थोड़ा समझदारी से काम लीजिए। सी, ब्रांड्स आर गुड, वंस इन अ वाइल यू हैव टू इंडल्ज इन इट जस्ट टू मेक यू फील गुड। इट्स लाइक कि कभी आप जाते हो और रोड साइड पे कुछ खा लिया है, राइट, कभी ढाबे में खा लिया, कभी लगा आज तो मैं ना आई गो टू अ नाइस फैंसी होटल और अच्छा सा खाऊंगी, वंस इन अ वाइल आपको होता है। लेकिन अगर आप हर रोज़ एक फैंसी होटल में जा रहे हो और वहाँ पर खा रहे हो और उसका बिल पे कर रहे हो, तो वो बिल आप कैसे पे करोगे? सिमिलरली ब्रांड्स का भी कॉन्सेप्ट है, वंस इन अ वाइल इज़ ओके, लेकिन अपने आप को ब्रांडाहॉलिक, एक ब्रांड की शॉप मत बना दीजिए। यू नो, यू शुड नॉट बी लाइक अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द ब्रांड। सो एंड प्लस आई थिंक इट्स वेरी एज स्पेसिफिक, हर चीज़ एज के साथ ही अच्छी लगती है। सो अगर मतलब मैं जब देखती हूँ कि 10 साल का बच्चा पूरा ब्रांड की दुकान बन के घूम रहा है, तो इसमें उस बच्चे की फॉल्ट नहीं है ना, एब्सोल्युटली द पेरेंट्स फॉल्ट। यू मस्ट ड्रॉ द लाइन, एवरीथिंग इज़ एज स्पेसिफिक। अपने बच्चे को जितना ग्राउंडेड रखेंगे उतना ही उसकी सपनों की उड़ान और उसकी अपनी उड़ान होगी। That's what I feel. Yeah. So, teenage is the age of puberty. We all know that. During this phase, the body undergoes many physical as well as hormonal changes. Correct. So, इसकी वजह से teenagers में काफ़ी insecurity आती है about their physical appearance. So, इसको हम कैसे cope up करें? सृष्टि, आई फील देखो इसमें एक तो ऑफ कोर्स अगर आपको कुछ मेडिकल इशू है, राइट, देन यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर और अ डाइटिशियन। बट अगर आपका इशू है कि आप पोसती हैं, पंजाबी में जैसे कहते हैं ना, यू आर लाइक अ काउच पोटैटो, फिर प्रॉब्लम आपके अंदर ही है ना, बिकॉज देर इज़ अनदर सेइंग दैट सेज इट्स नॉट दैट ओबेसिटी रन्स इन द फैमिली, इट्स नोबडी रन्स इन द फैमिली। सो अगर आपका ये कॉन्सेप्ट आ रहा है कि आपने यू जस्ट, अब सी बॉडी शेमिंग पे भी मैं ये कहती हूँ, इफ़ बॉडी शेमिंग इज़ बिकॉज ऑफ एनी हार्मोनल इम्बैलेंस और एनी मेडिकल प्रॉब्लम, then it is unacceptable. But if it is because of your lifestyle, even then it is unacceptable. You have to work hard. And फिर भी अगर चलो मान लिया कि आपका लाइफस्टाइल ऐसा था एंड यू हैव पुट ऑन वेट और यू हैव एनी इश्यूज, आपका कुछ फेस पे इशू है, देन यू नो व्हाट विल कम इनटू पिक्चर देन? पावर ड्रेसिंग। यू मस्ट नो हाउ टू ड्रेस अप, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। आपकी तो जनरेशन ऐसी है दैट यू हैव एवरीथिंग अवेलेबल। हमारे टाइम में तो सोचना पड़ता था, एक समय ऐसा था कि घर में ही कपड़े बनते थे, एक ही थान से 50 कपड़े बन जाते थे, आपके पास तो 50 ऑप्शंस हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट थिंक दैट हाँ आई कैन वेयर एनी थिंग, यू कैन वेयर एनी थिंग व्हाट सूट्स यू गुड। सो व्हाट हैपन्स, आजकल के जो टीनेजर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? दे थिंक वी कैन वेयर एनी थिंग, एंड देन व्हेन यू वेयर एनी थिंग इट मे और मे नॉट लुक गुड, देन यू शुड बी open to criticism also. But if you're wearing something, when you carry, tell me one thing, आपको लगता नहीं कई बार someone who's very thin या who's very fat, the way they carry themselves, आप कहते नहीं I really like the way you carry your weight. Yes. Right? So because they know how to dress up well. So in case because of XYZ reasons, अगर आपका body weight कम या ज़्यादा है, then understand the power of power dressing. Yeah. इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस वी जनरली सी कि बच्चे बुली होते हैं या वो दूसरे बच्चों को बुली करते हैं। Right.
तो आपके अकॉर्डिंग तो एक टीन, व्हाट मेक्स अ टीन अ बुली? ओके, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सी, पहली बात तो मेरे को जो लगता है ना, वो हम बाद में बात करते हैं कि एक टीन को बुली कौन बनना होता है, बट मुझे लगता है इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अनदर थिंग हियर, दैट आई कॉल इट द फिश रूल। सो डोंट बी अ फिश दैट पीपल ईट यू अप, एंड डोंट बी सेल्फिश दैट यू ईट अ पीपल। सो बुलिंग के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। बुलिंग का एक सबसे बड़ा रीज़न है ओवर पैम्पर्ड चाइल्ड, right? And bullying ka another reason hai underconfident child. So you have to understand the psychology here. Not just that someone who's a bully is overconfident, he could be underconfident. To hide that underconfidence, the person, be it a youngster, be it a teenager, or be it an adult, can bully others. So here it is very important to take a stand for yourself. Don't be stupid to run into teachers so that वो बच्चा आपको बाहर कहीं पकड़ ले. You have to be really smart how to handle a bully. And मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ टू टेक पेरेंटल एडवाइस। और अगर आप यंगस्टर हैं तो हर जगह हर बार पेरेंट्स की तरफ थोड़ा भागेंगे, देन इफ़ यू आर ब्लेस्ड विद गुड फ्रेंड्स, नथिंग लाइक इट। अदरवाइज you can always consult probably a school counselor, a college counselor, or any counselor that you know, but it's very important to take the right advice how to escape bullying. And of course, laws are very stringent. You can report bullying. So that is, you have to be very smart, like na fish bane, na selfish bane. And children who bully, I think it is very important for you to understand that it is karma. If you think that you can bully others, definitely someone will come around bullying you. अगर आपको मेरे इस बात पर विश्वास नहीं तो ज़रा इस चीज़ को सोच के देखिए। कई बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी का मजाक उड़ाया हो और उसके बाद आप भी उस सेम सिचुएशन में आ गए हो कि आपका भी वैसे मजाक उड़ाओ। So I have experienced yes, this. I'm sure we all would have experienced it some way or the other. So मजाक करना, किसी का बार बार मजाक उड़ाना is also bullying. So bullying is not just कि जाके किसी को मारना पीटना. Verbal bullying is, I think, more dangerous than physical bullying, because physical bullying तो दिख जाती है ना, verbal bullying तो दिखती भी नहीं है. So it's really important for children to understand that if I'm bullying others, will I like someone behaving like that with me? और कितनी बार तो ऐसा होता है because किसी को bully किया होता है वो bully बन जाते हैं. So I think it is very sad अगर किसी के साथ bullying हो रही हो, but I think you have to stand for yourself. Find out the right way how to report bullying, either to your school authorities, the college authorities, to your parents. But yes, neither you should bully nor you should get bullied. It's very important. Find the right way out. So for the next question, I think, ma'am, you are the best person to answer. There is a decline of reading habits in children nowadays. So according to you, what are the dire consequences of lack of reading in teenagers? So basically, it's the switch and swap. How do you do that? Well, it is not that easy. So I just went for a vacation, and I have seen a paradigm shift. So when you would go around a swimming pool, there was a time when you would see people with a book. They would be lounging in the pool area, holding a book in your hand, or see sand and book. You know, that I want to go to the sea and I want to sit there, sip there, and read my book. आजकल क्या हो गया? See sand and reels. See sand and videos. See sand and photos. See sand and selfie. जब see sand and book आ जाएगा, so जब आप अपने leisure, why I'm saying see sand is, जब आप अपने leisure time में देखिए, because आजकल if you talk about youngsters your age, you're very busy with your studies. एक स्पेसिफिक एज होती है छोटे बच्चे, जहाँ पे मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ, द पेरेंट्स शुड रीड द बुक टू द चिल्ड्रन टिल द एज ऑफ 10. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट टिल 9, सो दैट दे आर मोटिवेटेड. दे हैव टू स्विच as well. So the switch and swap is first for the parents, then only the children will follow. That goes without saying, but करते हम कम हैं, but अगर करेंगे बहुत फ़र्क पड़ता है. उसके बाद see, you have to enjoy reading. जो हमें लगता है बर्डन नहीं होना चाहिए. सो आई ऑलवेज एडवाइज फॉर अ न्यू रीडर, समवन हु इज़ ट्राइंग टू read after fairly long, it is always important to pick up a book that is unputdownable, a book that will, intrigue you, interest you. What will happen now, instead of picking up a motivational book that you will read 2 pages and ponder, think about it, and then you will pick up maybe after a week or maybe the next day, but sometimes don't even pick up at all. So it's very important to pick up a book that is unputdownable, and most important is switch and swap.
हमने रिसेंटली देखा कि एनिमल मूवी ने कैसे यूथ में तहलका मचा दिया. डू यू थिंक मूवीज लाइक एनिमल शुड बी विटनेस्ड बाय द यूथ, और उनके माइंड पर इन मूवीज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? Not just the movie Animal, but another movie of the same director. Please watch this. What tips would you give teenagers about the choice of friends? Good friends or bad friends? सी सृष्टि, यहाँ पे अगेन ना एक पहला ज़माना होता था कि मम्मी पापा बोलते थे हाय उनके साथ नहीं बैठना, वो बैड कंपनी है, अरे लीव दैट फ्रेंड ऑफ योर्स बिकॉज इट्स अ बैड, ही इज़ अ बैड इन्फ्लुएंस. ऑफ कोर्स यू हैव टू बी स्मार्ट इन पिकिंग अप योर फ्रेंड्स, बट to drop every second person because you do not have the wavelength is also not right. आपको अपने अंदर भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे. अगर आपको लगता है कि कोई बिल्कुल ही टर्मिनली ही बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहा है, देन ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक अ यू टर्न और फाइंड अनदर वे आउट. बट अदरवाइज फ्रेंडशिप्स आजकल बहुत ज़्यादा फ्रिवलेस हो गई है बिकॉज हमारे में पेशेंस रहा ही नहीं है. सो व्हेन यू हैव फ्रेंड्स, कुछ बातें आप उनकी सुनो, कुछ बातें वो आपकी सुने, ताना बाना एक साथ मिक्स एंड मर्ज करके दोस्ती आगे बढ़ती है. सो यू हैव टू बी ऑफ कोर्स वेरी स्मार्ट इन पिकिंग अप योर फ्रेंड्स, बट यू हैव टू बी पेशेंट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. ये नहीं हो कि अच्छा लड़ाई होगी तो अगला, ठीक है, एज एक सर्टन एज होती है, क्या मेरी उससे लड़ाई होगी, कट्टा तू देखो मैंने गिफ्ट दिया तो मुझे वापस दे दे, मैं तेरा बर्थडे गिफ्ट वापस कर दूंगी, वो एक स्पेसिफिक एज होती है. बट वंस यू बिकम अ टीनेजर और अ यंगस्टर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव रॉक सॉलिड फ्रेंडशिप बिकॉज आगे जाके आपको वो बहुत हेल्पफुल होती है. क्या टीनेजर्स पर एकेडमिक प्रेशर और पीयर प्रेशर होना सही है? क्या पेरेंट्स को अपने बच्चों को अच्छे मार्क्स लाने के लिए प्रेशराइज करना चाहिए? और टीनेजर एज अ टीनेजर, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस ऑफ स्टडीज? सो देर आर टू क्वेश्चंस है. पहला आई विल पिकअप के पीयर प्रेशर और एक जो आप कह रहे हो पेरेंट्स को अच्छे मार्क्स लाने के लिए प्रेशर देना चाहिए. नहीं, ज़रूर देना चाहिए, बट एक लिमिट में. इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इफ़ यू judge the ability of a fish to climb a tree, it will spend its whole life thinking it to be stupid. Every child is different. हर बच्चे के अंदर अलग, कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा साइंस में अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा इंग्लिश में अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा सब में अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा किसी में भी नहीं अच्छा हो सकता. सो आपको ऑफ कोर्स देखिए, प्रेशर और मोटिवेशन में फ़र्क है. ये पेरेंट्स जनरली कंफ्यूज कर जाते हैं. हाँ, कभी कभार प्रेशर होता है, डांट भी पड़ती है, बट आई ऑलवेज से दैट हाउ आई लुक एट इट, आई कॉल इट लाइक अ रेशियो, 9:3 रेशियो और 6:6 रेशियो. लाइक 9, अगर आपका बच्चा छोटा है तो 9 months ऑफ मस्ती एंड 3 months ऑफ पढ़ाई. अगर बच्चा फिर बड़ा हो जाए तो 6 months to 6 months, 6 months ऑफ रिलैक्सेशन, 6 months ऑफ पढ़ाई. और अगर बच्चा 10th 12th के एग्ज़ाम दे रहा है फिर तो पूरा 12 months चलता ही रहता है, राइट. बोर्ड एग्जामिनेशन का टाइम आ गया, और अगर बच्चा किसी कंपेटिटिव एग्जाम है तो शायद 12 months भी कम हो जाते हैं. बट यू हैव टू रियली बैलेंस कि आप कैसे कर रहे हैं. सो इफ़ आई लुक एट इट, अगर मैं क्लास 10th के बच्चे को बोलूँगी कि नहीं तेरे तो अपनी पढ़ाई छोड़ के थोड़ा मस्ती भी करो, लिटिल बिट इज़ ओके, बट ऑफकोर्स फोकस शुड बी देयर. लेकिन इसी के साथ साथ अगर मैं क्लास फर्स्ट के बच्चे को बोलूँगी कि 12 months तूने पूरा पढ़ाई करना है, बीच में थोड़ा बहुत मस्ती कर ले, पढ़ाई 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 चलती रहेगी, सो ऑफकोर्स इट विल अफेक्ट द चाइल्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो जो प्रेशर है वो एक लिमिट में होना चाहिए. अगेन एज स्पेसिफिक होना चाहिए. जिस एज पे जितना प्रेशर देना चाहिए, अभी ये तो आपको खुद ही अंडरस्टैंड करना है ना कि अगर बच्चे की पढ़ाई का, सपोज अगर आपका क्लास फर्स्ट का भी बच्चा है और उसका एग्ज़ाम है, उससे पहले दे दो, लेकिन अब एग्ज़ाम्स खत्म है, चलो अब हफ्ते के बाद अगेन यू गो बैक टू द ग्राइंड. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड. मैं हमेशा बोलती हूँ, प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू रेज एन एडल्ट. It is a child. Raise them like a child. Let them enjoy their childhood. Once they become a teenager, तो of course pressure बढ़ेगा. Adult होंगे तो एक different pressure बढ़ जाएगा. लेकिन एक बच्चे को बच्चे की तरह ही रहने दीजिए, और बच्चे की तरह, एक पौधे की तरह ही उगने दीजिए. अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट जो आपने बोला, स्ट्रेस मैनेजमेंट. अब स्ट्रेस मैनेजमेंट पे तो देखिए, आपको लगेगा कि मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ, बिकॉज आई फील कि स्ट्रेस का सबसे बड़ा, जो सबसे आसान तरीका है, जो हमारे भारतीय संस्कृति में हमेशा रहा है, वो रहा है योगा. सो योगा से ही होगा. लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि हम तो योगा कर ही नहीं सकते, मैं योगा करने के लिए वो हाउ टू अचीव दैट स्टेट, आई कांट सिट स्टिल, आई कांट सिट क्वाइट. आपकी जनरेशन में तो यही है कि बैठे स्थिर है ही नहीं, जब खड़े खड़े भी हम वी आर आइदर डूइंग द रील्स थिंग और वी आर मूविंग लेफ्ट राइट सेंटर. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक आउट टाइम
to do something that you enjoy. And by enjoy, I don't mean reels, because then you are distracted. फिर आप एक अलग, you like to play cricket, you like to play football, you like to play tennis, you love to dance, you love to paint, you love to exercise. It's very important to take out that 1 hour of constructive activity that you love doing. Okay, it could be just enjoying watching movies, but then of course there has to be limit. वो 1 का 2 hours कर दो, वो 1 का आप 10 hours कर दोगे, उसमें आप रील्स भी डाल देते हो, नेटफ्लिक्स सीरीज भी डाल देते हो, ऑफ कोर्स वहाँ पे खिचड़ी पक जाएगी ना. जब बैलेंस हिलता है किसी भी चीज़ का, तो फिर आपकी लाइफ भी बिगड़ती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डी स्ट्रेस योर सेल्फ, फाइंड आउट समथिंग दैट यू लाइक डूइंग, बट ऑफ कोर्स सेट अ टाइम लिमिट टू इट. We can see teenagers falling in love and getting into relationships easily. You know, आपको क्या लगता है कि ये सच में प्यार है या फिजिकल अट्रैक्शन ओ है? माय गॉड सृष्टि, आजकल तो न्यू टर्म्स आ गए ना, सिचुएशनशिप, बेंचिंग, ब्रेड क्रमिंग. सो बेसिकली देखिए, आप जो जैसा देखेंगे आप वैसा ही बनेंगे. जिस तरह का कंटेंट आजकल है, जिस तरह के वीडियोस हैं, जिस तरह के आप सॉन्ग ही देख लीजिए, आप तेरा हूँ फ़िलहाल, किसी का हो जाऊँ, राइट? यू लुक एट द काइंड ऑफ नेटफ्लिक्स सीरीज़. अगेन व्हाट आई सेड, दे हैव मेड इट नॉर्मल. अगर आप रिलेशनशिप में इनफिडेलिटी कर रहे हैं, अगर आप जंप कर रहे हैं फ्रॉम वन रिलेशनशिप टू अदर, सो दे थिंक इट इज़ वेरी नॉर्मल. सो वो जो एक सैंक्टिटी ऑफ अ रिलेशनशिप, मैरिज तो बहुत दूर की बात है, एक सैंक्टिटी ऑफ अ रिलेशनशिप को भी हम इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं, बिकॉज दैट इज़ द काइंड ऑफ कॉन्टेंट वी आर कंज्यूमिंग. सो to bench somebody, like benching in situationship has become the new normal. So जब ये न्यू नॉर्मल बन जाएगा तो अगेन हम किस में आ गए, वो 10 वाला जो था उसमें 8 की कैटेगरी में आ गए. देयर वुड बी 2 जिनके लिए नॉर्मल नहीं है. सो अब वो 2 इन्फ्लुएंस होके 8 में मर्ज हो जाते हैं, या वो 2 इन्फ्लुएंस करके 8 को 6 कर देते हैं. दैट इज़ अप टू यू. We very well know about vape culture, alcohol and drugs in teenagers nowadays. इसका उनकी लाइफ पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है. We know that very well. Right. Yeah. So how to handle these addictions in today's world? सी इसके लिए तो देखो, अगेन दिस इज़ वेरी इन डेप्थ एंड थरो, बट आई स्टिल रिमेंबर मैंने एक बार सिस्टर शिवानी का एक सेमिनार अटेंड किया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि इतनी यंग एज में जब आपके अंदर अल्कोहल कंटेंट और वेप कंटेंट जा रहा है, तो आप सोचो आपकी बॉडी में क्या होगा. इनफैक्ट सृष्टि, डू यू नो दैट जेन ज़ी इज़ एजिंग फास्टर. एक लेटेस्ट जो सर्वे आया है उसमें बोलते हैं कि जेन ज़ी इज़ एजिंग फास्टर बिकॉज द काइंड ऑफ अल्कोहल, द काइंड ऑफ nicotine, the kind of tobacco they're consuming directly or indirectly, it is alarming. But I think it really depends upon, again, how you want to lead your life. Again, I will say, whether you want to be a part of वो जो 10 में से 8 लोग जो गलत कर रहे हैं, जो इमोरल या इलीगल कर रहे हैं, जिनके लिए वो न्यू नॉर्मल बन गया है, आपको भी देखते देखते, आप चाहे उस 2% में चाहे 8%, अगर आप 2% में भी, तो आपके लिए भी वो न्यू नॉर्मल बन गया है. वेदर यू वांट टू बी टू दैट 2% और यू वांट टू बी influencing that 8% and take a few out of it, or completely take your friends out of it, it really depends. But it's very important to hold on to your ground, and I think यहीं पर आपका कैरेक्टर और आपका फ्यूचर डिसाइड करता है. Ma'am, there is one more type of addiction in teenagers. Social media addiction. I call it the viral virus. So you are also a content creator. तो आपके अकॉर्डिंग सोशल मीडिया एडिक्शन का टीनेजर्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट है या पॉजिटिव इम्पैक्ट है? देखिए, तो इट रियली डिपेंड्स हाउ यू वांट टू टेक इट. देयर आर लॉट ऑफ मोटिवेशनल वीडियोस, वो भी थोड़ा ज़्यादा ज्ञान नहीं हो जाता. इट हैज़ टू बी इन लिमिट, बट देयर लॉट ऑफ थिंग्स. अब देयर लॉट ऑफ वीडियोस दैट गाइड यू हाउ टू लूज वेट, हाउ टू स्टडी वेल. इन फैक्ट देयर आर एजुकेशनल वीडियोज़ एंड देर आर एंटरटेनमेंट वीडियोज़ ऑल्सो. अब ये थोड़ा सिर्फ एजुकेशन ही ली जाए, राइट? एंटरटेनमेंट वीडियोज़ ऑल्सो. बट जिस तरह का कंटेंट वायरल हो रहा है, सो आई कॉल इट कंटेंट के नाम पर कूड़ा. आप देख रहे हैं और आप उनको वायरल कर रहे हैं. एक स्टूपिड से वीडियो के मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ जाते हैं, एक एजुकेशनल वीडियो को 100 व्यूज़ भी नहीं मिलते. दिस इज़ वेरी सैड, बिकॉज हमें अपने आप को कहीं ना कहीं, ठीक है, वंस इन अ वाइल आपने कुछ फ़नी सा वीडियो देखा, यू लाफ एट इट, बट अगर आप उसी, बिकॉज सी इट्स एन एल्गोरिथम, अगर आप उस तरह का वीडियो देखेंगे, आपको उस तरह के वीडियोज़ वो दिखाने शुरू हो जाएंगे. सोशल मीडिया मुझे इस एल्गोरिथम में उलझा रहा है कि मैंने एक तरह का वीडियो देखा, उसी तरह के वीडियोज़ मेरे पास फिर सजेशंस आने लग जाते हैं. सो आई हैव टू मेक एन एफर्ट टू stop it and start watching. Probably make it a ratio of 70 to 30%. 70% कुछ अच्छा, 30% फन भी ज़रूरी है, but you have to again balance it there.
Teenage is a crucial period in one's life to choose their career path. You know, कुछ लोग अपने पैशन को अपना करियर बनाना चाहते हैं, बट उनके पेरेंट्स ये नहीं चाहते. वो चाहते हैं कि उनके बच्चे सिर्फ पढ़ें. So how to manage passion along with studies? सी अगेन दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव सृष्टि. ये तो हर एक पेरेंट की स्पेसिफिक चॉइस है, बच्चे की चॉइस है, आपकी किस्मत है, आप क्या करना चाहते हैं. अगर आप इफ़ यू कैन एक्चुअली मेक योर पैशन योर प्रोफेशन, देन आई थिंक यू आर द लकीस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ. बट कई बार डायरेक्टली नहीं होता. यू हैव टू गो थ्रू सर्टन रूट्स, यू नो. कभी नदियों से नालों से गुजरते हुए आप अपने पैशन के समंदर में पहुंचते हैं. क्या आपने But- भी अपने पैशन को अपना करियर बनाया? Absolutely. I made my passion my profession and I love it. So, and that is why I'm very happy in my space. बट ऐसा नहीं है कि ये एकदम से आ गया. देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड विच स्ट्रगल के बिना तो किसी चीज़ का महत्व भी नहीं रहता ना. यू कैन नेवर वैल्यू इट. वर्थलेस हो जाता है. सो जो चीज़ आपको प्लाटर पर मिल जाए, अगर आपको भूख लग रही है और आपको थोड़ा खाना वेट करना पड़े, देन यू वैल्यू दैट फूड ऑल द मोर. सामने पड़ा है, एक खा लिए, दो खा लिए, लाइक वट एवर एवरी डे. सो यू हैव टू वैल्यू इट. बट दैट्स, प्लीज अंडरस्टैंड, समटाइम्स you may not find the way, you know, directed or written in red lines. Okay, this is what you have to take, this is the yellow line, this is the green line. So, you know, life cannot come like red lights. So you have to find your own way out, maneuver, but be consistent. Patience is very important, and enjoy whatever you are doing is the most important. Happiness quotient. अगर आप happy हैं अपनी space में, तो आप उस space को धीरे 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 और happiness बढ़ाते जाएंगे. अगर आप किसी भी space में grip कर रहे हैं, तो आप हर जगह grip करेंगे. So just try to be happy in whatever you little or more you have. वो little का more बन जाएगा और more का too more बन जाएगा. Too much बन जाएगा in fact. Yeah. Ma'am, how to end? You can say that you give so many advice. My favorite is this. What's yours? Do let us know. मैम, आपने बहुत सारी एडवाइसेस दी. ऑल आर वेरी वैल्यूएबल. बट इनमें से मेरी सबसे फेवरेट है कि आपने कैसे बताया प्यूबर्टी में हार्मोनल चेंजेस को कोप अप करें. दैट्स माय फेवरेट वन. लेट अस नो. ओके, वो मेरी फेवरेट एडवाइस थी. अब आप बताइएगा आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी है. वो मेरी फेवरेट एडवाइस थी, बट अब आप बताइए कि आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी. सी, थैंक यू. थैंक यू so much.